Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you are doing fine today. I am Maham Lodi from Divisional Public School and Intermediate College, Lahore. And we're back with another lecture. This is going to be your lecture 12. I welcome you all to lecture 12 of Mathematics for class 1. Go grab your Oxford Countdown Book 1, your pencil eraser sharpener, and let's get started. Today our topic is going to be ordinal numbers. By the end of this lecture, we will have completed page 48, 49 and 51 of your countdown one. आज के लेक्चर को बहुत गौर से सुनना है. इसको समझने के बाद आपको ऑर्डिनल नंबर्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे. You will also find that you already know these numbers. You are familiar with them. लेकिन आज आपको पता चलेगा कि हम इन्हें ordinal numbers कहते हैं. Before we start off with ordinal numbers, let's see what you already know. You have learned to count the objects and tell their names. और आपको objects को arrange करना भी आता है, जैसे from bigger to smaller या smaller to bigger. अगर आप इन्हीं दोनों concepts को recall करें तो आज का topic आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. Let's see what we are going to study today. First of all, we will see what are ordinal numbers. ऑर्डिनल नंबर्स का ऑपोजिट होता है कार्डिनल नंबर्स. आप इन्हें भी जानते हैं. अभी हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर कि इन दोनों में क्या फर्क होता है. So we briefly compare ordinal and cardinal numbers. You will learn to write ordinal numbers up to 10. We will practice short form of ordinal numbers. We will practice ordinal numbers through some fun-filled activity. And at the end, हम ordinal numbers को days of the week पर भी apply करेंगे. Let's start off. Let's start with the introduction of ordinal numbers. Dear students, you know when your result is about to announce. You are anxious to know about your position. A student who secures highest marks, we say he or she is first in the class, then comes second and third and so on. इस तरह जब कभी आपका स्पोर्ट्स डे पर रेस हो तो उसका भी रिजल्ट अनाउंस किया जाता है. उन रिजल्ट्स को कुछ ऐसे शो करते हैं. The number which shows the position of a person or an object are called ordinal numbers. जो सबसे अच्छा करेगा, जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेगा, उसको मिलती है फर्स्ट पोजीशन. जो उससे थोड़ा सा नीचे हो उसको मिलती है सेकंड पोजीशन, और जो उससे भी नीचे हो उसको मिलती है थर्ड पोजीशन. So what do we learn? The numbers which show the position of a person or an object. These are ordinal numbers. जब आप किसी को number 1 कहते हो तो 1 is not an ordinal number. But when you say that that person is on the first position, first is an ordinal number. Let's have a brief comparison of cardinal and ordinal numbers. Here you can see there are 5 balls of different colors: red, yellow, blue, green and orange. Can you count these balls? How many are there? 1, 2, 3, 4 and 5. Yeah, there are 5 balls. Number 5 tells us the quantity of ball. These numbers that you can see right now, these are the cardinal numbers. Okay? Dear students,
Can you tell me about the position of these balls? Where is the red ball? At which position? The red ball is at the first position. What position is of the yellow ball? Second position. For the blue ball? Third position. What is the place of the green ball? It's on fourth position. And where is the orange ball? That is on the fifth position. Hope you understand the concept of cardinal numbers and ordinal numbers. All of the numbers that are written like 1, 2, 3, 4, 5 are cardinal numbers. And the numbers that show the position like first, second, third, fourth and fifth are called ordinal numbers. इनको ordinal क्यों कह रहे हैं हम? Ordinal order से बना है. आपको ये बॉल्स जिस ऑर्डर में पड़े हुए नजर आ रहे हैं हमने वही ऑर्डर बताए कि फर्स्ट पोजीशन पर रेड है, सेकंड पोजीशन पे येलो है, थर्ड पोजीशन पे ब्लू है, फोर्थ पोजीशन पे ग्रीन है और फिफ्थ पोजीशन पर ऑरेंज है. हमने उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको एक ऑर्डर दिया है, इसीलिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्डिनल नंबर्स हैं. होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. Let's move on to the next topic now. Cardinal numbers, ordinal numbers and short form of ordinal numbers. हम ordinal numbers को पूरा पूरा FIRST first इतना लंबा लिखने की बजाय एक short form में भी तो लिख सकते हैं. हर नंबर के लिए, हर पोजीशन के लिए short form क्या होगी वो अब हम देखते हैं. Now we'll learn the first 10 ordinal numbers and their short forms. You must learn and memorize the correct spelling of ordinal numbers. ये बहुत important है इसलिए इसको ध्यान से करना है और सही सही spellings के साथ याद रखना है. अब cardinal numbers आपके सामने हैं 1 से 10 तक. Ordinal number उसके respective क्या होंगे? For cardinal number 1, the ordinal number will be first. For 2, it will be second. For 3, it will be third. For 4, it will be fourth. For 5, it will be fifth. For 6, it will be sixth. For 7, it will be seventh. For 8, it will be eighth. For 9, it will be ninth. And for 10, it will be 10th. चलें जी, अब हमने पूरे पूरे तो लिख लिए. इन सब के स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से याद करने हैं. अब हम इनकी शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं. फर्स्ट की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? फर्स्ट की शॉर्ट फॉर्म होती है दिस वन. अब अगर ध्यान से देखो तो शॉर्ट फॉर्म बनाई कैसे है? कार्डिनल नंबर 1 लिखा और ऑर्डिनल नंबर के लास्ट 2 लेटर्स. शॉर्ट फॉर्म बन गई. अब सेकंड के लिए क्या बनेगी? This one, cardinal number 2 and last 2 letters of ordinal numbers. Next one will be third. ये भी वैसे ही बना, cardinal number 3 और third के last 2 letters. Fourth के लिए क्या होगा? 4 cardinal number and last 2 letters of ordinal numbers. अब फोर्थ के आगे 10th तक जितने हैं सबके लास्ट लेटर्स TH हैं, तो फोर्थ के बाद वाले सब कैसे होंगे? फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th. वेल डन स्टूडेंट्स. अब आप जल्दी से अपनी काउंटडाउन 1 का पेज 48 खोलें. जल्दी जल्दी से. Turn to page 48. Wow, there is an interesting picture of zoo train. 10 animals on a zoo train. 10 animals हैं जो एक zoo train पे जंगल सफारी पर जा रहे हैं. Ordinal numbers को यूज करते हुए हम इन animals की position बता सकते हैं, है ना? So look carefully and tell
Which animal is there on the first place? Mr. Lion is on the first place. Now tell me which position is for Mr. Monkey. Fourth position. Where is Mr. Mouse? At the eighth position. Where is Mr. Rabbit? On the second position. Where is Mr. Cheetah? On the fifth position. Where is the long-necked giraffe? Position 9. Now tell me, where is Mr. Frog? On the third position. Very good. Now tell me, where is Mr. Crocodile? On the sixth position. Where is the elephant? On the 10th position. And where is our cute deer? On the seventh position. Very good. Okay, dear students, how many animals have you seen on the zoo train? Yes, there were 10. Now turn to page number 49. उन 10 animals के pictures आपको पेज 49 पर नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ इन्हें wrong order में place किया गया है. You have to write the correct order of each animal in the box provided under the picture. अब यहाँ पे आप लाइन की पिक्चर देखोगे तो आप जू ट्रेन में नोट करो, जू ट्रेन पे लाइन की पोजीशन क्या है? फर्स्ट पोजीशन. लायन फर्स्ट प्लेस पर है, इसलिए पेज 49 पर उसकी पिक्चर के नीचे फर्स्ट लिखा हुआ है. नाउ टेल मी, व्हाट पोजीशन इज द क्रोकोडाइल ऑन? जू ट्रेन में देखकर बताओ, क्रोकोडाइल किस पोजीशन पर है? दैट्स ऑन द सिक्स्थ पोजीशन. बाकी के बॉक्सेस फटाफट से फिल करो. You take 5 minutes and complete this one. Dear students, let's move on further. Turn to page number 51. पेज 51 पे हम ऑर्डिनल नंबर्स को डेज ऑफ द वीक पर अप्लाई करेंगे. You know there are 7 days in a week. You also know the names of these 7 days. और हर वीक मंडे से स्टार्ट होता है, संडे पे ख़त्म हो जाता है, इसलिए तो हम संडे को वीक एंड कहते हैं. अब पेज 51 पर देखें. Here is question 4 which requires you to write the missing word. हम डेज ऑफ द वीक का ऑर्डिनल नंबर्स के मुताबिक पोजीशन एम्प्टी बॉक्स में लिख के सेंटेंस कंप्लीट करेंगे. लाइक मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. ट्यूसडे क्या होगा? ट्यूसडे इज द सेकेंड डे. वेडनेसडे इज द थर्ड डे एंड सो ऑन. Write down these positions on your book. All of these positions tell us what? Days of the week. So Monday is the first day of the week. Tuesday is the second day of the week. Wednesday is the third day of the week. Got the idea? Okay. We have learned the short forms of first 10 ordinal numbers in this lecture. In the last activity of today's lecture, you can see on page 51, you have to match each day of the week to respective ordinal numbers short form. संडे को हम वीक का 7th डे कहते हैं, तो इसलिए आप संडे को 7th से ज्वाइन करोगे एंड सो ऑन. You can do that. If you have any queries regarding this lecture, you can comment down below. Thank you.